17th February was a busy day for the Women's Cell of Railway Protection Force at Ranchi railway station. They had just spotted two separate groups which were escorting children out of state in the absence of their guardian. The station is the last point of intervention to prevent child trafficking in Jharkhand, which is rampant in the state. RPF personnel withhold these passengers for questioning and don't let them board the train. About a week ago, a 14-year-old girl from Simdega district in Jharkhand was found beaten to pulp by a couple in a posh society in Gurgaon. Following that news story, ThePrint came to Jharkhand to find out what are the problems related to child trafficking and child labor that ail the district. For the same story, we came to Gumla, which is a district in Jharkhand, borders on Chhattisgarh as well as Simdega. Simdega, Kunthi and Gumla are districts which are the most affected in Jharkhand by child trafficking. Why? Because agriculture over here is difficult to do. All year round employment over here is limited to just over 30 days is what villagers after villagers told ThePrint. Because of this, everyone ventures out of their cities in search of work. Children say it's better to go out and work in Delhi than die of hunger in their houses in Jharkhand. They also face domestic abuse. They face problem of not getting adequate education, because of which they are also tempted to cross the borders of their villages in search of a better life. But more often than not, these children are lured by their own friends, acquaintances, relatives, and find themselves in prison-like situations when they reach big cities like Delhi, Chennai, Kolkata, and Mumbai. This report will tell you more about the problems that ail Jharkhand, which lead to this very dire issue of child labor in the state. According to NCRB data, Jharkhand recorded 49 cases of child trafficking in 2021, the second highest in the country. The grand allure of city life makes children pull books out of their school bags, stuff it with clothes, and hop on a train out of Jharkhand. These children are unaware that they are vulnerable to abuse. मेन रीजन है कि बच्चे सोचते हैं ना कि बाहर में हमको बहुत अच्छा खाना कपड़ा मिलेगा, रहन सहन, मतलब अब जैसे जैसे इंटरनेट हो गया है तो उस लोग सोचते हैं ना कि जो हम देख रहे हैं उस तरह से हमारा भी विकास होगा। इस तरह का सोच में वो लोग बच्चे चले जाते हैं। किसी के बहकावे में कोई बोलते कि हाँ फलाना जगह जाओगे तो तुमको अच्छा मिलेगा, इस तरह से रहोगे। कुछ दूसरों को देख के वो लोग भी मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमको भी जाना चाहिए बाहर। Out of state migration in Jharkhand is the norm, and most take up labor intensive jobs in other states. Lack of employment and no access to irrigation, added with rocky, barren terrain in pockets of the state, add to the problem. आर्थिक समस्या गांव में सबसे ज़्यादा होता है। लोगों के पास खाने के लिए सरकार चावल दे रही है, चावल फ्री में मिल रहा है, लेकिन उनकी खेती से जो बाकी चीज़ें उपजना चाहिए वो पानी की समस्या के कारण नहीं हो रहा है। अब झारखंड के गांव में देखेंगे तो पीने का पानी भी पूरी तरह से नहीं है लोगों के पास। उनको 1-8 किलोमीटर दूर जा कर के पानी लाना पड़ता है, और ये पानी की समस्या से भी बहुत सारा तस्करी होता है। लोगों के पास कोई काम नहीं रहते हैं, उनके पास खेती का कोई साधन नहीं है, इसके कारण लोग दिल्ली की ओर जा रहे हैं। ThePrint visited Gumla district, one of the areas prone to trafficking. Its rocky terrain offers little or no prospect of economic growth, even in agriculture. The green revolution has not reached here. Villagers only grow rice during monsoon season and migrate after harvest in search of menial jobs, and these include children as well. Only 15% of Jharkhand's agricultural land has access to irrigation facilities. नक्सल के डर से भी लोग अपने बच्चों को दिल्ली भेजते थे। अगर वो नहीं भेजेंगे तो उनको डर रहता है कि नक्सल गुट के लोग इनके बच्चे को उठा के लेके चले जाएंगे और नक्सली दस्ता में शामिल हो जाएंगे, तो वहाँ हो सकता है कल पुलिस की गोली से मर जाए। लेकिन अगर वो दिल्ली रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक नक्सल फैक्टर को लेकर के उनके गार्जियन हैं सो डर करके बच्चों को दिल्ली जाने के लिए भेजने के लिए मजबूर रहते हैं।
This fight for a better life rarely translates to independence or financial upliftment. Tata Institute of Social Sciences, Mumbai study, which had a sample size of 2,364 people, found that 5.6% of migrants from Jharkhand received only partial payments, while 1.6% did not receive any payment at all. This holds true for minors as well. Under Section 3 of the Child and Adolescent Labour Prohibition and Regulation Act, it is illegal for teenage children between 14 to 18 years to take up hazardous occupations and processes. And this includes any occupation linked to domestic work and brick kilns. Yet, the destination of the majority of children and adolescents is households and brick kilns. From poverty, children are transported directly to big houses in posh areas of South Delhi, Gurugram and Noida in the employment of wealthy, well-educated families. What happens behind these closed doors occasionally makes headlines when cases of children allegedly being physically and verbally abused and held captive for a whole year until their contract is up for renewal. Like these two girls from Fori village who were trafficked to Srinagar in Kashmir. While one alleged she was raped by her employer, another said she was harassed while working. They stayed in the valley for 3 months before they could establish contact with their families. The two girls live in abject poverty. While one goes to school, the other has opted out. As an orphan, she needs to work and bring some money home. Though Jharkhand has the highest number of child trafficking cases in India, the data, neither NCRBs or the states, reflect how pervasive the problem is. अब आप हमें बताइए कि ट्रैफिकिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे बच्चों को बहला फुसला के या माँ बाप को पैसे का प्रॉमिस देके घरों से निकाला जाता है और उनको दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में लाया जाता है। झारखंड से जो बच्चों की तस्करी हो रही है उसमें एक बड़ा गैंग काम करता है और सबसे पहले वो बच्चों के परिवार को अपनी जाल में फंसाता है, उसको प्रलोभन देता है कि आपके बच्चे अगर दिल्ली महानगर जाएंगे, काम करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपके बच्चे वहाँ अच्छे से रहेंगे, खाना पीना खाएंगे। लेकिन होता उसका बिल्कुल विपरीत होता है। जो बच्चे एक बार उस दलदल में फंस जाते हैं वो सालों तक बाहर नहीं निकल पाते हैं और बाद में जब माँ बाप का अगर संपर्क टूट जाता है बच्चों से, तब उसके गार्जियन है सो पुलिस के पास आते हैं, कंप्लेन दर्ज कराते हैं, तब पुलिस एक्शन में आती है तब और वैसे बच्चों को मुक्त कराया जाता है। अभी कुछ वर्षों से, विगत 2-3 वर्षों से ये ट्रैफिकिंग का मामला कम हुआ है। कैसे कम हुआ है, क्या स्टेप्स लिए हैं? क्योंकि यहाँ प्रशासन भी अब थोड़ा सा एक्शन में है। जितने भी ट्रैफिकर का नाम आ रहा है उनकी एक सूची बनाया गया है आहतू थाना प्रभारी के माध्यम से और उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जिसके भी डर से लोग ये कम माने इसमें कमी आई है। अच्छा, FIR ज़्यादा अच्छे से फाइल हो रही है? जी, FIR हो रहा है और उनका अरेस्ट हो रहा है जो भी ट्रैफिकर का नाम आ रहा है। The vigilance and monitoring committees at village level are also responsible for preventing the trafficking of children. We need to activate vigilance committees at the village level. We are collaborating with the Panchayati Raj department and conducting sittings in villages to generate awareness about the child labour problem, said Rajeshwari B, Director of Women and Child Department, Government of Jharkhand. Kasturba Gandhi Vidyalayas are the most important part of rehabilitation. Once girls are rescued, the Jharkhand State Child Welfare Committees in various districts counsels the victims and their families and helps the children get admission in these schools. For The Print, this is Shubhangi Misra reporting from Jharkhand.